We started with the diuretics chapter. We have seen the process of urine formation. Process of urine formation that occurs in the three steps. There is a glomerular filtration, then selective glomerular filtration, then reabsorption, and then active secretion. So glomerular filtration, everything is filtered in the glomerulus except blood cells and plasma proteins, and whatever filtrate is there, out of that 98% filtrate is reabsorbed. So whatever essential components are there, like glucose, amino acids, phosphate, organic acid, organic ions, and all the required material which is being filtered, that is a reabsorb, known as selective reabsorption. And after that, whatever is not required, that is actually secreted, known as active secretion. So we have also seen the different sites of action of diuretics. We have also seen the mechanism of action of we have also seen the classification, different classifications for diuretics. We have also seen the carbonic anhydrase inhibitors. Okay, second thing, we'll start from here. So next one is osmotic diuretics. So osmotic diuretics. So they are the weak diuretics. So osmotic diuretics, they are the weak diuretics. They are the medium efficacy diuretics. So mostly mannitol is most widely used diuretics from osmotic category. Now it will act on a proximal convoluted tubule site, and also as per the recent evidence, it will act on a early loop of Henle. Okay? So that is the site second. So it will act on a proximal convoluted tubule, that is site 1 and site second. So osmotic diuretics, they exert their effect by their osmotic property. So osmotic effect, and also they decreases the medullary tonicity. है ना, medulla area जो होता है ना, cortex and then medulla. So middle layer, that is after the cortex you will have medulla in the kidney, and they decreases the tonicity of medullary. So osmotic effect, they exert osmotic effect whenever they will be excreted. So along with them, water will be excreted. The reason for reabsorption of sodium in the tubular lumen along with the, okay, so because of their osmotic effect, what they do, so whenever there is a reabsorption of sodium in the tubule, so along with the sodium, water is also moving, water is also reabsorbed. But what happens in presence of this osmotic diuretics, so what will they do, they are excreted, and due to osmotic property they will take water along with them. So they will not cause sodium loss, but they will cause water loss. So reason to reabsorption of sodium from tubular lumen along with the sodium water is also reacted passively in presence of non-absorbable solutes. So for example, mannitol. So diffusion of water is reduced. So while reabsorption of sodium takes place, so water is also reabsorbed. But in presence of this osmotic diuretic like mannitol, so which is a non-absorbable solid. So what happened? So the diffusion of water is reduced. So uh, the reabsorption of water is reduced, means excretion of water is increased, but relative to sodium, जितना सोडियम के प्रमाण में, जितना सोडियम के प्रोपोर्शन में वाटर भी रिएब्सॉर्ब होना चाहिए नॉर्मली, इन प्रेजेंस ऑफ दिस मैनिटॉल इट डज नॉट. मैनिटॉल के प्रेजेंस में ये नहीं होता. मैनिटॉल क्या करता है, उसका डिफ्यूजन कम कर देता है, वाटर का डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन जो होता है ना, अलॉन्ग विद सोडियम रिएब्सॉर्प्शन के लिए वो नहीं कर देता, एंड उसका वाटर का एक्सक्रीशन कर देता है. सो नेट water absorption is reduced, but no sodium is, सोडियम का एब्सॉर्प्शन नहीं, बट वाटर का एब्सॉर्प्शन ही कम करता है. नाउ एडवर्स रिएक्शन क्या होंगे इसके? सो ऑब्वियसली हेडेक, नोशिया, पॉलीडिप्सिया, कंफ्यूजन, चेस्ट पेन, it can cause cellular dehydration, thrombophlebitis at the site of injection, and local necrosis. Mannitol जो होता है, it is an osmotic diuretic and it is most widely used osmotic diuretics. It is contraindicated in case of acute tubular necrosis. किडनी में necrosis है तो यूज नहीं करना है. It is contraindicated in case of pulmonary edema, acute left ventricular failure, cerebral hemorrhage, and congestive heart failure or congestive cardiac failure. Now it is used in a barbiturate poisoning, threatened acute renal failure,
increased intraocular pressure, you know, if there is increased intraocular pressure, so mannitol is used, also used in the cerebral edema. It is a drug of choice in case of cerebral edema, this mannitol. It will decrease the intracranial tension, it will decrease the intraocular tension also. So if it decreases the intraocular tension, it is used in the glaucoma. If it decreases the if it decreases the intracranial tension, it is used in the, again, bleeding and edema associated with the bleeding. Am I audible to you? Am I audible to you? So osmotic diuretics, they exert their diuresis effect due to their osmotic property. Osmotic property की वजह से वो डायोरेटिक इफेक्ट देते हैं. इसका एग्जांपल क्या है osmotic diuretic का? Mannitol is there, then isosorbide is there, then your urea is there, your glycerin is there, glycerol is there. So they, what they cause is, they, because of their osmotic property, they prevent the reabsorption of water in proportion with the sodium. So you know that sodium is will be reabsorbed in the tubules. सोडियम का reabsorption होगा, उसके साथ में वाटर का भी reabsorption होगा. बट यहाँ पे क्या करता है कि इन प्रेजेंस ऑफ दिस मैनेटॉल के प्रेजेंस में वाटर का जो डिफ्यूजन होता है सोडियम के साथ में, as in proportion with that, so that is reduced. So that's why there is an excretion of water because of that reduced reabsorption of water, and it causes the diuresis or natriuresis. The reason why this is the, now headache is the most common adverse effect, nausea, polydipsia, confusion, chest pain. It causes the cellular dehydration भी करता है सेल का because of their osmotic property. थ्रोम्बोफ्लेबिटिस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे भी उसका इंजेक्शन दे रहा है वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, क्लॉटिंग होगा. लोकल नेक्रोसिस, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ ट्यूबुलर नेक्रोसिस. इट इज contraindicated in case of acute left ventricular failure, cerebral hemorrhage and congestive heart failure. यूज रहेगा उसका बारबिचुरेट पॉइजनिंग में, थ्रेटन acute renal failure, increased intraocular tension, so that's why used in the glaucoma, used in the cerebral edema also. These are the uses of osmotic diuretics. So they are the weak diuretics. Side याद रखना है आपको. They act on a PCD, site 1 and site 2. These are the two sites for action. Now next आता है loop diuretics. So loop diuretic, as the name indicate, loop diuretic मतलब क्या है? They will act on a loop of Henle. So obviously loop diuretics. So example is nothing but the furosemide, torsemide and bumetanide. Furosemide, torsemide and bumetanide. So they particularly act on a thick ascending loop known as the site 3. So what they will do? They will do same thing. They will prevent the reabsorption of sodium again. If reabsorption of sodium is prevented, so reabsorption of water is also prevented. That's why it causes the diuresis. Again, mechanism of action. So what they do? They inhibit the sodium potassium chloride symport. Sodium potassium chloride symport. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. They inhibit the sodium potassium chloride symport. That is a pump responsible for the reabsorption of sodium and potassium. Okay, in the ascending limb of loop of Henle. So where that pump operates. So ये क्या पंप क्या करता है? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्ट. ये पंप क्या करता है कि ये पंप सोडियम का रिएब्सॉर्प्शन करता है ना, क्लोराइड का सोडियम का रिएब्सॉर्प्शन करता है, अलॉन्ग विद दैट वाटर आल्सो रिएब्सॉर्ब क्लोराइड पोटेशियम, यहाँ पे इसका रिएब्सॉर्प्शन करता है ना. तो एक ही डायरेक्शन में इसको लेके जाता है, सोडियम को, पोटेशियम को, क्लोराइड को. दैट्स व्हाई सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्ट, and prevents the exchange of sodium with the potassium and hydrogen, which result in the excretion of sodium. तो ये जो loop diuretics है, furosemide, bumetanide, torsemide, they binds to the sodium potassium chloride symport and inhibit this. Okay? That's why prevent the exchange of sodium with potassium and hydrogen, which results in the excretion of sodium along with the water, and also inhibit the reabsorption of calcium and magnesium. So loop diuretics क्या करेंगे भाई? So they are the known as a high efficiency diuretics. They are known as a highly efficacious diuretics. Okay, and they inhibit the reabsorption of sodium, potassium. Sodium का reabsorption inhibit करता है, potassium का करता है. Also prevent the reabsorption of this magnesium, calcium. So what will they do? And they are the high ceiling diuretics. You know? So they inhibit the reabsorption
of oil, they inhibit the reabsorption of sodium 20 times. So टोटल फिल्ट्रेट जो होता है उसमें जितना मान लीजिए किडनी से जो फिल्टर हो चुका है उसमें 100% सोडियम है, तो उसका 20% रीअब्सॉर्प्शन प्रिवेंट करता है, मतलब 20% री-एक्सट्रैक्शन करता है सोडियम. So along with that 20%, 40% water goes. So that's why they causes drastic diuretics. That's why they are known as high ceiling diuretics or highly efficacious diuretics or loop diuretics. Okay, and now it causes the removal of sodium, it causes the removal of potassium, it causes the removal of calcium, it causes the removal of magnesium. That's why hyponatremia, hyponatremia, excessive loss of sodium, hyponatremia, excessive loss of potassium, hypokalemia. हाइपोनाइट्रेमिया करेगा, हाइपोकैलेमिया करेगा, हाइपोकैल्सीमिया भी करेगा. So goes hypocalcemia, hypomagnesemia. That's why these are the adverse effects. Okay. So also inhibit the reabsorption of calcium and magnesium. That's why hypocalcemia, hypomagnesemia, hyponatremia, hypokalemia. All these are the adverse effects. Serious electrolyte disturbances due to loss of your sodium, potassium, magnesium. So your muscle will get fatigue. You will have muscle cramps. Then orthostatic hypotension, acute renal, okay, acute urinary retention. They can cause acute urinary retention, and eighth cranial nerve damage, and that's why they causes the deepness. That's why they causes the deepness. So क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक्स. मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? हाइपोकैलेमिया, दैट इज द मतलब सीरियस इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस. इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस मतलब सोडियम को अकल देगा, पोटेशियम को अकल देगा, है ना, मैग्नीशियम को अकल देगा, कैल्शियम को अकल देगा. Because of that, hyponatremia, hypokalemia, hypomagnesemia, hypocalcemia. Then orthostatic hypotension, fatigue, muscle cramp. अगर सॉल्ट आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लॉस ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली आपके मसल में फटीग आएगा. यू विल हैव क्रैम्प्स इन द मसल. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन भी करता है, एंड इट कॉजेज द हियरिंग लॉस. इट विल डैमेज द एट cranial nerve. ओके, एंड मैक्सिमम डैमेज इज डन बाय इथाक्रेनिक एसिड. याद रखना है आपको. So ethacrenic acid is also one of the loop diuretic, ethacrenic acid, and maximum damage to the eighth cranial nerve is done by ethacrenic acid. So out of this, furosemide, also known as a furosemide, furosemide is also known as a furosemide, and then another drug is the bumetanide, okay, and torsemide. So remember here, bumetanide is the most potent. Bumetanide along with the मतलब ये जो लूप डायरेटिक्स है उसमें फ्यूरोसेमाइड, है ना, ब्यूमेटिनाइड एंड टॉर्सेमाइड, ये ड्रग होते हैं. सो ये तीनों में से ब्यूमेटिनाइड जो होते हैं दैट इज द मोस्ट पोटेंट. सबसे ज्यादा पोटेंट ब्यूमेटिनाइड होता है, एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो होता है ना वो टॉर्सेमाइड होता है. सो ब्यूमेटिनाइड यहाँ पे आपको आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर बट यू हैव टू नोट डाउन. सो ब्यूमेटिनाइड is the most potent and torsemide is the longest acting. Torsemide जो होता है longest acting होता है. Bumetanide is the most potent. So these are the adverse effects. Adverse effects याद रखना. सभी all diuretics will have adverse effect like hyponatremia, hypocalcemia, not hypokalemia. Hypokalemia is the most common adverse effect for all diuretics क्योंकि वो पोटेशियम का लॉस करेंगे, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन इनहिबिट करते हैं, तो है ना, सोडियम का लॉस करेंगे, अगेन पोटेशियम को भी लॉस करते हैं. ओके, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस. बट लूप डायरेटिक्स कॉजेज मोस्टली दिस थिंग्स. लूप डायरेटिक्स क्या है? दे आर हाईली एफिशिएंसी डायरेटिक्स. उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा दे आर हाई सीलिंग डायरेटिक, उसकी वजह से बहुत सारा यूरिन फॉर्मेशन होता है. उसमें सोडियम का लॉस होता है, पोटेशियम का लॉस होता है, कैल्शियम का लॉस होता है, मैग्नीशियम का लॉस होता है. दैट्स व्हाई हाइपोनाइट्रेमिया, loss of sodium. Okay, so decrease the sodium level in the body, hyponatremia. Decrease the potassium level in the body, known as a hypokalemia. Decrease the potassium level in the body of calcium, known as hypocalcemia. And magnesium का अगर loss होता है तो hypomagnesemia, right? That's why. Okay, again इसके adverse effect याद रखना है आपको सिर्फ, ठीक है? Severe electrolyte disturbances. Am I audible to you? Audible आएगा. Okay,
So remember, ethaconic acid is having highest potential to damage the 8th cranial nerve. They causes the deafness. आपको बहरा बना देंगे. Now uses क्या होंगे इसके? So they are the safe diuretics. Safe diuretics. Mostly यहाँ पे congestive cardiac failure में इसको use करते हैं. So it is used in the pulmonary edema, chronic renal failure, as an hypertensive, as an antihypertensive drug. In case of acute renal failure also, they are also used in the barbiturate poisoning and hypercalcemia. जब कैल्शियम लेवल ब्लड का ज़्यादा हो गया तो इनको यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम का लॉस बढ़ा देना. It will increase the excretion of calcium. That's why hypercalcemia में उसका यूज़ करेंगे. हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्शियम है मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ गया. कहाँ पे बढ़ गया? मिया मतलब क्या आता है? ब्लड होता है. रिया मतलब यूरिन होता है. सो यूजेस उनकी याद रखना है. इट इज अ सेफ, दे आर द सेफ डायरेटिक्स used in the pulmonary edema, chronic renal failure, as an antihypertensive drug. In case of acute renal failure, they are used. In case of barbiturate poisoning, they are used, and in case of hypercalcemia, to enhance the excretion of calcium, they are used. Okay. Now, bumetanide is a similar drug. It is a more potent than furosemide. So 40 times more potent bumetanide. Okay. And used in the pulmonary edema. It can also cause myopathy. It can cause myopathy. इसका adverse effect है myopathy. Myopathy means problem in the muscles. Problem in the muscles. Bumetanide is a more potent than furosemide. 40 times more potent. Question आता है उसके ऊपर. And it is used in the pulmonary edema. It can cause myopathy. Torsemide, that is a 3 times more potent. Torsemide जो होता है, that is also more potent than furosemide. It is more potent than furosemide, 3 times. Used in the edema, hypertension. Other properties are similar to the furosemide, but this torsemide is a longest acting. Torsemide जो होता है, long acting होता है. You can see over here the mechanism of action of furosemide. This is known as a luminal membrane, and this is a basolateral membrane. तो यहाँ पे जो जाएगा वो यूरिन में जाएगा. So what they do? So furosemide, bumetanide, torsemide, and ethaconic acid, loop diuretics, what they do? They inhibit the sodium potassium chloride co-transporter. Mechanism याद रखना है इसका, सोडियम क्लोराइड. ओके, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड co-transporter. Right? So this pump is inhibited. So furosemide inhibit sodium potassium chloride co-transporter. What will happen because of this inhibition of this pump? So there is a more excretion of sodium, more excretion of chloride, and also potassium. That's why there is they are known as highly efficacy diuretics. They are used in the acute renal failure, chronic renal failure, pulmonary edema, etc. etc. तो बस यही टर्म याद रखना है. मैकेनिज्म, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड co-transporter inhibitor. So what they do? They inhibit this pump. Pump is responsible for the reabsorption of sodium and chloride and potassium in the ascending limb of loop of Henle. जो थिक लिंब होता है ascending limb, वहाँ पे उसका reabsorption करता है ये पंप. और ये पंप को इनहिबिट करने के कारण क्या होता है? फिर reabsorption नहीं हो पाता, सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट होता है. So this sodium is excreted. More sodium is excreted, along with the sodium more water will be removed. So that's how they will act. समझ में आ रहा है इसका? Now next one is the thiazide diuretics. So thiazide diuretics, they are known as a base thiazide, hydrochlorothiazide. Okay, so they will act on a site 4. Site 4 means that is a distal convertative. Okay, they will act on a site 4. So chlorothiazide was the first member. Actually it is not a thiazide, it is a thiazide like diuretic, chlorothiazide. Then hydrochlorothiazide is thiazide, chlorothiazide is thiazide, base thiazide is thiazide. So they act in a DCT, distal convertative, before sodium hydrogen exchange pump, that is site 4. So याद रखना इस site के ऊपर क्वेश्चन आता है. Site 4 is the site for mechanism of thiazide diuretics.
क्या करता है, इनिबिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट, इनिबिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट एट द डीसिट, एट द डीसिट डिस्टल कम्यूटेटिबल जो होता है वहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट होता है, उसको इन्वर्ट करता है। व्हाट इज रोल ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट? अगेन रोल इज नथिंग बट द एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर। बस याद ही रखना है कि आपको देखो पहले था आपका पहला क्लास देखा है आपने कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, है ना। सो कार्बनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करता है। कार्बनिक एनहाइड्रेज किसके लिए रिस्पांसिबल है? अगेन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयन, राइट। बाइकार्बोनेट आयन नहीं, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन, इनिबिशन ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज कॉजेज द सोडियम एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बोनेट। तो क्या होगा, सिस्टमिक एसिडोसिस होगा आपको बाइकार्बोनेट लॉस होने का, और बाइकार्बोनेट ज्यादा यूरिन में जाएगा तो यूरिनरी अल्कलोसिस होगा, है ना। सेकंड क्लास देखा अपन ने ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। थर्ड क्लास देखा है अपन ने लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स क्या करेंगे, दे विल इनहिबिट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एट साइट 3। साइट 3 क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, वहां पे क्या होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, है ना, है ना, को सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, है ना। तो उसको इन्वर्ट करने के कारण सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, है ना, उसके कारण सोडियम का एक्सक्रीशन होगा, वहां पे वाटर भी जाएगा, और ये सबको रीअब्सॉर्प्शन कम करते हैं लूप डायरेटिक्स। उसके बाद में है थायजाइड। थायजाइड वाले क्या करेंगे, दे इनहिबिट द सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट at the site 4 in the DC by competing with the chloride binding site, primarily act on a site proximal to the sodium hydrogen exchange. It is early to the distal tubules. That's why early distal diuretics, they are known as early distal diuretics. They are a moderate diuretics, okay. So they are a medium efficacy diuretics. Thiazide, they are the medium efficacy diuretics. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होंगे, वही जहाँ पे लॉस होता है पोटेशियम का सोडियम का वही करेंगे। दे मे कॉज हाइपरग्लाइसेमिया, ओके। बाकी तो कॉमन है, हाइपोकैलेमिया, है ना, वो तो कॉमन है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस वगैरह। इन एडिशन टू दैट ये हाइपरग्लाइसेमिया, है ना, ये विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, हाइपरग्लाइसेमिया और डिसग्लाइसेमिया, विल इंक्रीज द यूरिक एसिड लेवल, हाइपरयूरिसेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरलिपिडेमिया लिपिड लेवल बढ़ाएंगे, हाइपोकैलेमिया एंड सल्फोनामाइड लाइक एलर्जिक रिएक्शन। तो हाइपोकैलेमिया तो करेंगे ही करेंगे, हाइपोकैलेमिया तो करेंगे ही करेंगे, एंड सल्फोनामाइड लाइक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, बिकॉज थायजाइड के स्ट्रक्चर में भी क्या है, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई दे विल कॉज सल्फोनामाइड लाइक एलर्जिक रिएक्शन। acute depletion of your fluid, acute saline depletion, dilutional hyponatremia, dilutional hyponatremia, मतलब सोडियम का लेवल कम करें, so decrease sodium level hyponatremia, potassium level hypocalcemia, calcium level hypocalcemia. Are you getting or not? Thiazide का uses of thiazide diuretics, are you getting or not? Mechanism, thiazide diuretics they act on a site 4 first, साइड 4 कहाँ पे होता है, डिस्टल कम्यूटेटिबल बिफोर सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज फॉर्म। अब इसमें क्या आता है, थायजाइड, प्रॉपर्ली थायजाइड डायरेटिक्स लाइक हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, बेंजथायजाइड, है ना, क्लोरोथायजाइड, एंड थायजाइड लाइक डायरेटिक्स लाइक क्लोरोथायडोन, है ना। बाकी वो दो तीन देखा है आपने, क्लोरोथायडोन एंड ऑल, दे आर नोन एज जिपामाइड, इंडापामाइड, क्लोरोथायडोन, दे आर नोन एज थायजाइड लाइक डायरेटिक्स, ओके। नाउ व्हाट दे डू, ये सभी डायरेटिक्स क्या करेंगे, सोडियम का एब्सॉर्प्शन कम करेंगे, रीएब्सॉर्प्शन, है ना, जो फिल्टर हो चुका है, जो लगता है वापस बॉडी देगी ना, अलग अलग साइट पे ऊपर एक्ट होते हैं और अलग अलग पंप, अलग अलग चैनल्स पर एक्ट होते हैं। तो जैसे ये अभी थायजाइड्स क्या करेंगे, दे विल एक्ट एट अ साइट 4, okay, साइट 4 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप, okay, so they will before sodium hydrogen exchange, so they will inhibit this sodium chloride symport, they will inhibit the sodium chloride symport. now sodium chloride symport का काम क्या होता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करना, क्लोराइड को भी रीअब्सॉर्ब करना एट द डिस्टल एंड, एट द डिस्टल एंड जो बचा को, मोस्ट ऑफ द सोडियम इज रीअब्सॉर्ब इन द पीसीटी ओनली, मोस्ट ऑफ द सोडियम इज रीअब्सॉर्ब इन द
लूप ऑफ हेनली ओनली। डिस्टल कन्वर्टेड टेबल के जब वहां पे जाता है तो वहां पे बहुत कम सोडियम रहता है, बहुत कम सोडियम उसमें रहेगा। मोस्ट ऑफ द ऑलरेडी एब्सॉर्ब होगा किसमें, पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टेबल में, या फिर आपका लूप ऑफ हेनली। जो बचा कुचा है वो डिस्टल तक जाएगा, वहां पे फिर से सोडियम क्लोराइड इंपोर्ट होता है। सो ये भी क्या करता है, जो बचा कुचा है उसको भी रिएब्सॉर्ब कर लेता है। इनिबिशन ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड इंपोर्ट by competitively competitively bind with the chloride binding site and primarily at on the site proximal to the sodium hydrogen exchange pump, early distal diuretics. Okay, that's why they are known as early distal diuretics. Now यहाँ पे सोडियम वैसे ही कम होता है ना, तो वो कम जो रिएब्सॉर्ब होने वाला है, जितना बचा कुछ है जो रिएब्सॉर्ब होने वाला है उसको इनहिबिट करता है। तो क्या करेगा, सोडियम का हकल देगा थोड़ा सा, मतलब डायलिसिस करेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर मीडियम इफिकेसी डायरेटिक्स। यार मीडियम इफिकेसी डायरेटिक्स समझ में आया। एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इनके अलॉन्ग विद द अदर जो होता है, बाकी आप तीन चिपको दो, नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया, उसके बाद में वो यूजफुल नहीं है, लेकिन दे विल कॉज हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हिच डायरेटिक विल हैव हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। थायराइड डायरेटिक्स हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरयूरेसिमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडेमिया, hypokalemia, and they will cause sulfonamide like allergic reaction. They will cause acute saline depletion, dilutional hyponatremia. Uses क्या रहेगा, they are the first line agent in the diuretic, they are the first line agent in the hypertension। तो hypertensive एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होते हैं उसमें फर्स्ट लाइन एजेंट कौन सा है आपका, थायराइड डायरेटिक्स। दे आर द diuretics as an antihypertensive in the prevention of recurrent renal calculi। prevention of recurrent renal calculi, calculi मतलब क्या होता है, किडनी स्टोन होता है। प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट है ना, बार बार उसको किडनी स्टोन रहा है, अभी अभी रिमूव किया किडनी स्टोन, फिर से हो रहा है। तो रिकरेंट रेनल कैलकुलाई इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, डायबिटीज इंसिपिटस में बिकॉज ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ शुगर है ना, नेफ्रॉन का नेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, इडिमा एंड हाइपर कैल्सियूरिया, इडिमा एंड हाइपर कैल्सियूरिया, these are the uses। Now next we'll see potassium sparing diuretics। तो इसको पहले mechanism देखते हैं। Okay, so there is a this one is known as a sodium chloride symport। symport मतलब एक ही डायरेक्शन में लेके जाने वाला पंप है सोडियम को क्लोराइड को। okay, it is a basolateral method। okay, then it inhibits the sodium chloride symport। so because of that सोडियम का जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ना वो नहीं होगा, it will decrease the reabsorption of sodium at the distal end। that's why there is excretion of sodium, there is excretion of sodium along with the sodium, you know that water will also be removed। so, बस इतना याद रखना है क्या, थायराइड डायरेटिक्स है ना, what they do, they inhibit the sodium chloride symport। बस इतना ही याद रखना है। जैसे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, दे इनहिबिट द कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है ना। उसके बाद में अपन देखा है लूप डायरेटिक्स, दे इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है ना को ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में देखा आपने थायराइड, दे इनहिबिट द सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। बस इतना है। नाउ डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ सम कॉमनली यूज्ड डायरेटिक्स। कॉमनली यूज्ड डायरेटिक्स के डोज कितने, जैसे फ्यूरोसेमाइड लूप डायरेटिक्स है, ब्यूमेटिनाइड लूप डायरेटिक्स है। सो फ्यूरोसेमाइड 20 to 80 मिलीग्राम, ड्यूरेशन होता है 3 to 6 आवर्स। इसका ब्रांड नेम का नाम है लैसिक्स। लैसिक्स नाम का एक टैबलेट आता है आपका, उसका ब्रांड नेम है लैसिक्स, में होता है फ्यूरोसेमाइड, लैसिक्स टैबलेट, लैसिक्स 40, लैसिक्स 80, 20 भी आता है, 20 to 80। ब्यूमेटिनाइड 0.5 to 2 मिलीग्राम। क्यों? because bumetanide is a it is a it is a more potent than furosemide, it is a 20 times more potent than furosemide, that's why dose is decreased। hydrochlorothiazide, polythiazide, chlorthalidone, zipamide, metalazone, all these are known as thiazide like diuretics। hydrochlorothiazide 25 to 100 milligram dose है,
पॉलीथाइजाइड 1 to 3, क्लोरथाइडोन। इसका डोज इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको जस्ट समझने के लिए ये इंक्लूड किया है। क्लोरथाइडोन, सिपोमाइड, मेटो, ओके, मेटोलेजोन, दीज आर द थायजाइड लाइक डायरेटिक्स। तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का एक ब्रांड नेम होता है आपका इसीडेरिक्स, बाकी नहीं। लेकिन लेसिक्स जो है एक बार पूछा है आई थिंक फार्मासिस्ट एग्जाम में, लेसिक्स इज द ब्रांड नेम फॉर फ्यूरोसेमाइड, फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा है। बाकी लास्ट में आता है आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। ये तीन वाले जो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, स्पाइरोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन एंड अमिलोराइड। अमिलोराइड तो इनका डोज देखो, स्पाइरोलैक्टोन 50 to 100 मिलीग्राम, ट्राइमेट्रिन 50 to 100 एंड अमिलोराइड का 5 to 10। ओके, ब्रांड नेम। कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड फ्यूरोसेमाइड। सो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड क्या है? इट इज अ थाइजाइड डायरेटिक्स, so it will act on a site 4, है ना, it will act on a site 4 before the distal converted, it will inhibit the sodium chloride symport। इसका इनहिबिट किसको इनहिबिट करता है? सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। ये फ्यूरोसेमाइड क्या है? लूप डायरेटिक है। ये कहाँ पे एक्ट होता है? साइट 3 के ऊपर एक्ट होता है। ये क्या करेगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कॉन्ट्रापोर्ट को इनहिबिट करेगा। तो देखो इनके कंपैरिजन में एफिकेसी, सो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इज अ लो एफिकेसी डायरेटिक, furosemide is a high efficacy diuretics। साइड ऑफ एक्शन है ना, साइड ऑफ एक्शन में ये हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड अर्ली डिस्ट्रक्टिव। व्हाट इज द साइड ऑफ एक्शन ऑफ furosemide? ascending thick limb, the thick limb of loop of hand। mechanism क्या है? with thiazide inhibit the sodium chloride symport and it is loop diuretics, they inhibit the sodium potassium chloride co-transport। onset of action इसका 1 आवर होता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का, एंड फ्यूरोसेमाइड का 20 to 40 मिनट्स। ड्यूरेशन इसका लॉन्ग है 8 to 12 आवर्स, और फ्यूरोसेमाइड क्या है? शॉर्ट एक्टिंग। इसका ऑनसेट भी कम होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज आल्सो लेस एंड ड्यूरेशन इज आल्सो लेस। रिस्पांस टू इंक्रीजिंग डोज, नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज, जितना डोज बढ़ाएंगे उतना डायलिसिस नहीं होगा। नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्पांस when you increase the dose of hydrochlorothiazide, but okay, and here diuresis is a dose dependent, जितना डोज बढ़ाओगे फ्यूरोसेमाइड का उतना डायलिसिस होगा। हाइपर यूरेसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाने के अगर बढ़ गया, so those drug which increase the uric acid level known as hyperuricemia, so higher incidence of hyperuricemia is there in case of hydrochlorothiazide। तो अभी है ना, लॉजिक की बात है, अगर हाइपर यूरेसीमिया करता है सो इट इज ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ गाउट। गाउट में ये यूज नहीं कर सकते। गाउट में मतलब पहले ही यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया होता है पेशेंट का, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट यूज दिस हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इन द गाउट एज अ डायरेटिक्स। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है कि नहीं? हाइपर यूरेसीमिया इंसिडेंस इट इज लो इन केस ऑफ फ्यूरोसेमाइड। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल ये क्या करता है? बढ़ता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, so contraindicated in the diabetes, so no such a significant effect, ये कुछ नहीं करता है। ओटोटॉक्सिटी कौन करता है? फ्यूरोसेमाइड ओटोटॉक्सिटी करता है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड नहीं करेगा। प्राइमरी यूज क्या है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का? हाइपरटेंशन। प्राइमरी यूज ऑफ फ्यूरोसेमाइड एडिमा। आर यू गेटिंग? एम आई ऑडिबल टू यू? नेक्स्ट आएगा आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो उसमें पहला आता है अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। So what is aldosterone? Antidiuretic hormone. So antidiuretic hormone. So aldosterone is antidiuretic hormone or vasopressin. So aldosterone is hormone. It will act on its receptor. Okay. So known as intracellular receptor. It will increase the production of aldosterone reactive peptide. Aldosterone induced peptide. So aldosterone will induce particular proteins. So aldosterone induced peptide, which increases the sodium and water retention। तो अल्डोस्टेरोन कैसे एक्ट होता है? अल्डोस्टेरोन नॉर्मली कैसे एक्ट होता है वो देख लो, आपको समझ में आएगा कि स्पाइरोलैक्टोन का एक्शन क्या होता है। सो अल्डोस्टेरोन it will act on its receptor, it will increase the gene transcription, it will increase the production of aldosterone induced peptide, AIP, aldosterone induced peptide। तो अल्डोस्टेरोन इंडोस्ड पेप्टाइड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पेप्टाइड मतलब वही ना, दैट
पंप जो होते हैं पंप्स, sodium hydrogen exchange pump, इसके whatever pumps are there, they are nothing but the proteins receptor, they are the receptor, right? So aldosterone by interacting with its receptor will increase the production of aldosterone, aldosterone induced protein, which will cause more sodium and water retention. Now spironolactone is a nothing but the aldosterone antagonist. So what will it do? It will decrease the formation of aldosterone induced protein, and that's why there is a more excretion of sodium. As there is excretion of sodium, water is also excreted. So it is a mild siluretic or mild diuretic, aldosterone antagonist. Now spironolactone क्या है? It is having steroidal structure. Steroid का structure होता है इसमें, right? So it can cause gynecomastia in the males. It can cause menstrual irregularity in the female. Okay, so another antagonist, new antagonist, iprelenone. It's a new antagonist for aldosterone with a less adverse effect, with a less adverse reaction. What is the mechanism of action and site? So it will act on a late distal commutative sodium hydrogen exchange and collecting duct. It is a site 5. So lastly ये potassium sparing diuretic act होते हैं at a site 5. So they will block the mineralocorticoid receptor and prevent or inhibit the sodium reabsorption. Blockage of mineralocorticoid receptor, that is a aldosterone receptor. Blockage of that receptor causes the decrease in the aldosterone induced protein and decreases the sodium reabsorption in the later part of your distal tubule and collecting duct. तो यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में सोडियम का reabsorption होता है. So that's why they are mild diuretic. So they are mild diuretic. Blockage of mineralocorticoid receptor and prevents or inhibit the reabsorption of sodium, okay, in a later part of distal commutative and collecting duct. Adverse drug reaction क्या है? Hypokalemia, metabolic acidosis, gynecomastia, loss of libido. And loss of libido मतलब sexual desire कम हो जाएगा. Then impotence in the male, menstrual irregularity in the female. NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, they inhibit the excretion of this drug. NSAID के साथ में अगर देंगे इसको spironolactone का excretion कम हो जाए. They are used in the treatment of hypertension, congestive cardiac failure with hirsutism. Hirsutism मतलब क्या होता है? Hirsutism excessive. Okay, hirsutism means growth of hairs on the female में यहाँ पे हेयर ग्रोथ होगा चेस्ट इसके ऊपर बोलते फेस के ऊपर. Hirsutism, treatment of hypertension in congestive cardiac failure with the hirsutism. Specifically used for the treatment of primary hyperaldosteronism. Aldosterone का लेवल अगर बढ़ गया, primary hyperaldosteronism, उसमें भी यूज करते हैं. And also it is also known as a Cone syndrome. Hyperaldosteronism is Cone syndrome. Primary hyperaldosteronism is Cone syndrome. उसमें यूज करते हैं. Now potassium sparing diuretics continuation. Last में आता है amiloride and trimetrin. So they will act on a site 5. Amiloride and trimetrin. So direct action on a late distal tubule and collecting tubule. Inhibition of renal epithelial sodium reabsorption. इसके ऊपर क्वेश्चन GPAT में आ चुका है 2023 में. So they inhibit the renal epithelial sodium reabsorption. Last में जो collecting duct होता है वहाँ पे. So they inhibit the renal sodium reabsorption, renal epithelium sodium reabsorption. और उसका कैटेगरी वही है, renal epithelium sodium reabsorption inhibitors. उसका कैटेगरी वही, amiloride and trimetrin. So no serious adverse effect other than hypokalemia. Then it can cause troublesome diarrhea, occasionally skin rash and dryness of mouth, like your anticoagulants. यूजेस है उसका pseudo aldosteronism. Pseudo मतलब क्या है? फॉल्स. अल्डोस्टेरोनिज्म मतलब क्या है? अल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ है, मतलब फॉल्स अल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो चुका है. अल्डोस्टेरोन का लेवल मतलब प्रॉपर्ली अल्डोस्टेरोन इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन उसके जैसे सिम्टम्स मिल रहे हैं. जैसे होता है pseudo parkinsonism.
पार्किंसोनिज्म मतलब डिफिशियंसी ऑफ डोपामाइन, बट स्यूडो पार्किंसोनिज्म मतलब क्या, वहाँ पे डोपामाइन का डिफिशियंसी नहीं है फिर भी पार्किंसन के सिम्टम्स आ रहे हैं, स्यूडो पार्किंसोनिज्म। तो वैसे स्यूडो अल्डोस्टेरोनिज्म मतलब क्या, वहाँ पे अल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है बट उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, स्यूडो अल्डोस्टेरोनिज्म। Okay, so amiloride trimetrin they are used in the pseudo-aldosteronism, diuretic without potassium loss, diuretic without potassium loss। बाकी एडवर्स इफेक्ट सेम ही रहेंगे एक्सेप्ट हाइपोकैलेमिया। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक जो होते हैं वो हाइपोकैलेमिया नहीं करेंगे, उनका नाम ही है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, मतलब पोटेशियम का लॉस नहीं होंगे। सो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, how they will act and where they will act. You can see on this slide. So in the collecting duct, amiloride will act on this slide. So inhibit the epithelial sodium reabsorption, epithelial sodium reabsorption, and spironolactone. You know that spironolactone is nothing but the, it is a steroid. Okay, it is a aldosterone antagonist. So what will it do? It will, okay. So it will inhibit the aldosterone receptor, aldosterone antagonist. It will limit the aldosterone receptor and prevent the formation of proteins. Okay, it's mRNA, you know. So that is aldosterone induced protein. So it will block the aldosterone receptor and prevent the formation of aldosterone induced protein. Okay, so aldosterone induced protein which is responsible for the this epithelial sodium channels, epithelial sodium ion। okay, ये aldosterone induced protein जो है ना वो क्या करता है, ये सोडियम आयन चैनल्स बनता है, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स, sodium ion channel जो होता है epithelial sodium ion channel, so they are produced more। so if aldosterone react with the aldosterone receptor, it will increase the uh, it will uh, it will bring about a change in the DNA and will cause the mRNA will be, there is formation of mRNA, transcription, replication, transcription, then translation is protein synthesis। so aldosterone, you know, induced protein synthesis will be there। so AIP, aldosterone induced protein, so they are the nothing but the sodium ion channel। now spironolactone inhibit this receptor and prevent the formation of this aldosterone induced proteins, aldosterone induced proteins, that is the sodium ion channel का production है ना कम कर देगा। सोडियम आयन का, सोडियम चैनल का रोल क्या है यहाँ पे, सो इट कॉजेज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ये सोडियम आयन चैनल सी कम हो गए तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुआ मतलब डायलिसिस होगा, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा मतलब एक्सक्रीशन होगा, है ना। तो यहाँ पे पोटेशियम को कुछ हाथ नहीं लग रहा है, more sodium will be excreted in the distal end of collecting duct or distal end of uh, distal fluid tube। Now at that end there is a one more pump known as sodium potassium exchange pump। So more sodium will be excreted, now that more sodium will be excreted, and also this ये जो होता है AIP, aldosterone induced protein, so also उसका काम होता है इंक्रीज इन द सोडियम चैनल, यहाँ पे सोडियम चैनल का बढ़ता है और एक बढ़ता है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उसको भी यही बनता है। सो देयर इज अ इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। तो यहाँ पे जितना सोडियम एक्सक्रीट होगा, है ना, यहाँ पे जितना सोडियम एक्सक्रीट होगा तो वहाँ पे उतना ही पोटेशियम उसके एक्सचेंज में अंदर ले जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। That's why they are known as a potassium sparing diuretics। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ बोला। Yes, you are getting or not? Are you getting or not? Amiloride, trimetrin, they are known as a luminal epithelial sodium reabsorption inhibitors। Amiloride and trimetrin, amiloride and trimetrin। बाकी spironolactone क्या है? Spironolactone is a aldosterone antagonist। ये अलग तरीके से एक्ट होता है। ये क्या करेंगे, इससे सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन जो है वो प्रिवेंट करेंगे। अमीलोराइड एंड ट्राइमेट्रिन कहाँ पे, इपिथेलियल सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब, इन द लेट डिस्टल डीसीटी के बाद में कलेक्टिंग डक्ट के आसपास दे विल एक्ट। एंड कंपैरिजन बिटवीन फ्यूरोसेमाइड एंड स्पाइरोनोलैक्टोन, केमिस्ट्री एंड साइट ऑफ एक्शन।
Furosemide is a sulfonamide derivative. It will act on the ascending limb of LA, ascending limb of loop of LA. Spironolactone क्या है? It has a steroid structure, steroidal nucleus. It will act on the distal tubule and collecting duct. Mechanism क्या है? Furosemide का it will inhibit the sodium potassium chloride co-transport and prevent the reabsorption of sodium. That's why causes diuresis. ये क्या करेगा? It is a aldosterone antagonist. Spironolactone is aldosterone antagonist. क्या करता है? It will block the aldosterone receptor. Because of blockage of aldosterone receptor, so there is a decreased synthesis of your aldosterone induced protein, and which are responsible for the sodium ion channels. The sodium ion channel ही कम रहेंगे, वहाँ पे बनेंगे, सोडियम का reabsorption कम ही रहेगा, सोडियम एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, डायलिसिस करें. So efficacy, in terms of efficacy, they are the furosemide is a highly efficacious drug, highly high efficacy is there. So aldosterone antagonist low efficacy. Onset of action जो है furosemide का वो quick होता है. So quick onset of action 2 to 5 minutes. Within 2 to 5 minutes you get the diuresis. Okay. The onset of action of spironolactone is slow. It may take several days because it acts via intracellular receptor. इसका सेलुलर रिसेप्टर कौन सा होता है? टाइप 4 रिसेप्टर जो होता है आपने देखा है ना, टाइप 1 आयन चैनल, टाइप 2 जीपीसीआर, टाइप 3 एंजाइम लिंकर, टाइप 4 इंटरसेलुलर रिसेप्टर में एक्ट होता है. दैट्स व्हाई इट विल टेक सेवरल डेज. इट विल increases the potassium excretion. कौन? furosemide will increase the potassium excretion, so leads to hypokalemia. ये क्या करता है स्पाइronolactone? It will decrease the potassium excretion. It can cause hyperkalemia. ये पोटेशियम को बढ़ा सकता है लेवल, पोटेशियम का लेवल कम करता है. That's why hypokalemia. All diuretics have hypokalemia as adverse effect except potassium sparing diuretics. Okay. Now adverse effect क्या रहेंगे? इसका तो adverse effect है orthodoxy, लेकिन ये spironolactone gynecomastia करेगा, hirsutism करेगा. Primary use of this furosemide, so it is used in the congestive cardiac failure, edema, ascites, pulmonary edema, etc. Now, what is the primary use of this spironolactone? Hyperaldosteronism, and it is also an adjunct drug with the other diuretics to reduce the potassium level. Contraindication: the furosemide is contraindicated in case of allergy to the sulfonamide. If patient is having allergy to the sulfonamides, furosemide is not given because it can induce the allergy. And spironolactone is contraindicated in case of peptic ulcer. Is contraindicated in case of peptic ulcer. So that is a comparison between two drugs, furosemide and this spironolactone. Next is the other important points from diuretics, है ना. तो indication of diuretic therapy आप कब indicate करेंगे, किस कारण की वजह से diuretic देना पड़ता है. So what are the indications for diuretic therapy? Diuretics drug कशामध्ये द्यायचे असतात? So it is used in the edema associated with the sodium retention, as in case of cardiac, then hepatic and renal edema. Edema मतलब क्या? Accumulation of fluid in the cells, interstitial fluid. Due to that you will get edema. Edema मतलब सूजन, आपलं सुजलंय ना, सुजतं काहीतरी, सुजतंय. So due to that, edema associated with the sodium retention in such as a cardiac edema, hepatic and renal edema. Edema in the pregnancy and idiopathic edema. Edema in the pregnancy, idiopathic edema. Diuretics are used in the pulmonary and cerebral edema. Now, pulmonary edema कब होता है? Pulmonary edema congestive cardiac failure में pulmonary edema होता है. Acute oleurouric renal failure, ना आपको पेशाब नहीं हो रहा है, renal failure है. In that case, diuretics are used. Diuretics are also used in the drug poisoning, such as due to barbiturates and salicylic. Barbiturate acid poisoning, salicylic acid poisoning, weak acids. In this case, diuretics are given. Diuretics are given in case of poisoning also. Non-diuretic uses of diuretics, मतलब non-diuretic uses मतलब urine formation की बजाय दूसरा क्या यूज है? So obviously they are used in the hypertension. So thiazide diuretics, they are used in the hypertension, first line agent, idiopathic hypertension. And calcium urolithiasis. Calcium urolithiasis मतलब क्या? कैल्शियम यूरोलिथियासिस मतलब क्या? आपकी किडनी में कैल्शियम के स्टोन्स बन जाएंगे. इट इज कैल्शियम यूरोलिथियासिस.
So hydrochlorothiazide is used. Then diabetes insipidus में भी use करते हैं. Hydrochlorothiazide is used in diabetes insipidus, nephrotic syndrome, diabetic nephrotic syndrome. Hypercalcemia. So if there is an increased calcium level in the body, so furosemide is given because it causes the loss of sodium, potassium, calcium and every ions. Then hypernatremic state. अगर सोडियम का लेवल ज़्यादा हो गया आपके बॉडी में, हाइपरनाइट्रेमिया हो गया आपको, so you have to use diuretics. It will remove the sodium, particularly furosemide. Glaucoma, mountain sickness. So in case of glaucoma, mountain sickness, so acetazolamide is used. These are the non-diuretic use of drugs. और drug causing edema. Edema कौन करते हैं भाई? Edema करने वाले ड्रग कौन से? ड्रग कॉजिंग इडेमा. So example of drug causing fluid retention. तो NSAID करते हैं, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory. They cause the fluid retention and edema. Flucortisol, calcium channel blockers, certain anti-hypertensive drugs, and then hormones like testosterone, estrogen, they also causes the edema. Now स्पेशल पॉइंट्स उसमें एक याद रखना है आपको, ये 4-5 पॉइंट बहुत ही फ्यूरोसेमाइड. इट इज अ लूप डायरेटिक. ये क्या है? लूप डायरेटिक और हाई सीलिंग डायरेटिक और हाईली एफिकसी डायरेटिक और सल्फोनामाइड कंटेनिंग डायरेटिक एंड it has a vasodilation action. Furosemide is a diuretic plus vasodilator, also responsible for the quick relief in case of left ventricular failure and pulmonary edema. Used as an intravenous drug. Then bumetanide is the most potent loop diuretic, 40 times more potent than furosemide. Torsemide has the longest half-life. Ethacanic acid is a highly ototoxic drug. Ethacanic acid is the highest ototoxic. It can cause sleep disturbance. Thiazide diuretics and loop diuretics increases the toxicity of digitalis by causing the hypokalemia and hypomagnesemia. So there are factors which increases the toxicity of digitalis. So I think I have taken, or I think I might be left that slide. So hypokalemia, hypomagnesemia, hypercalcemia. ना कैल्शियम ज़्यादा लेवल हो गया तो डिजिटलिस का टॉक्सिसिटी बढ़ता है, पोटेशियम लेवल कम हो गया तो डिजिटलिस का टॉक्सिसिटी बढ़ता है, राइट? So hypokalemia, hypomagnesemia, hypercalcemia, these are the predisposing factors for digital toxicity. Then amiloride is a drug of choice in case of lithium induced diabetes insipidus. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Amiloride is a drug of choice in case of lithium induced diabetes insipidus. देखो एक मॉडल बनता है आपका यहाँ पे. So if you want to study a anti-diabetic drug, if you want to study anti-diabetic drug in the animals, so you have to induce the diabetes. You have to induce the diabetes in the animal first. So how you can induce? So this lithium ion will induce the lithium induced diabetes insipidus. Amiloride is a drug of choice in case of lithium induced diabetes insipidus. Are you getting or not? समझ रहा है कि नहीं? Now anti-diuretic हार्मोन ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन. ये क्या है? इसका नाम ही है एंटी डायरेटिक हार्मोन. ये यूरिन फॉर्मेशन नहीं होने देगा, यूरिन एक्सक्रीशन नहीं होने देगा. सो एंटी डायरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, दैट इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड, एंड इन दैट यू हैव टू लोब, पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब. So there are 8 hormones produced by anterior lobe and there are 2 hormones produced by posterior lobe. Posterior lobe में कौन सा होता है? ADH हार्मोन एक होता है, और एक कौन सा होता है? Yes, anybody? Posterior lobe में 2 हार्मोन्स मिलते हैं, है ना? So posterior lobe will secrete 2 hormones, antidiuretic hormone and one more is there. Yes, anybody? Yes, anybody? कौन सा? Oxytocin. So oxytocin and ADH, they are produced by your posterior lobe pituitary, and rest of the hormones they are produced by anterior pituitary. ACTH, बाकी सब growth hormone हो रहे, they are produced by anterior pituitary. So ADH is nothing but the antidiuretic hormone produced by posterior lobe of pituitary gland, also known as a vasopressin. ADH को अपन vasopressin बोलते हैं. Human ADH is a arginine vasopressin. Arginine vasopressin ये हार्मोन है, human ADH.
Now it will act on its receptor known as a V1 V2 receptor, vasopressin receptor. By acting on a V1 V2 receptor, the V2 receptor activation causes the increase in the sodium chloride reabsorption in the acid medium. Activation of V2 receptor by this vasopressin or ADH will increase the sodium and chloride reabsorption. Reabsorption जितना ज़्यादा होगा उतना यूरिन कम फॉर्म होगा. Reabsorption या फिर एक्सक्रीशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन. सो एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करता है, सोडियम क्लोराइड का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है ना. उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन कम बनता है. और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ दिस एल्डोस्टेरोन सॉरी EDH. So in the kidney it causes the reabsorption of water in the distal tubule and collecting duct and nephron of the nephron, leading to reduction in the urine. है ना. ये क्या करता है, reduction in the water, okay, reabsorption of water and okay, it causes the increase in the reabsorption of water and sodium in the distal tubule collecting duct of nephron, which leads to reduction in the urine volume. यूरिन का वॉल्यूम कम होता है. That's why it is antidiuretic hormone. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या एक्शन होगा, ऑब्वियसली यूरिन है ना. यूरिन का वॉल्यूम मतलब कम होगा, मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा. तो इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल. इसका नाम है वैसोप्रेसिन. ये ब्लड वेसल को प्रेस करता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है. एक साइड पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, दूसरे साइड पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. So initially it will cause tachycardia, later it causes the bradycardia. It is also a neuromodulator in the brain. सीनियस में ये न्यूरोमॉड्यूलेटर है, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एक्ट करता है. Stimulation of V2 receptor increases the level of coagulation factor 8. जो vasopressin है, also activation of this V2 receptor, it will act on its receptor known as vasopressin 1 receptor, vasopressin 2 receptor. Acting on a vasopressin 2 receptor, it increases the reabsorption of sodium and water in the kidney, which increases the blood volume, which increases the cardiac output, which increases the blood pressure. Also, it is a vasopressing agent, so increases the blood pressure by increasing the peripheral vascular resistance. Also increases the coagulation factor 8. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, नोशिया, बाइलियरिकोलिक मतलब बाइल जो है आपका गॉल ब्लैडर उसमें स्पाज्म आएगा. Abdominal cramps due to increased peristaltic activity, hypotension and shock due to coronary spasm. ये adverse reaction है उसका. Uses क्या है, use post operative ileus, then abdominal distension, esophageal varices. esophagus में अगर आपका कोई छेद हो गया, esophageal varices due to it causes the portal hypotension. acute hemorrhagic gastritis में भी इसका यूज होता है. Intravenous vasopressin is effective in the systolic cardiac arrest due to anti-diabetic function. It is used in the diabetes insipidus. Nocturnal enuresis. Nocturnal enuresis मतलब बेड में ही आप नींद में ही आप सुसु कर देते हो. Bleeding disorders. Benzothiazine like chlorpropamide. Benzothiazine derivative होता है chlorpropamide. That is used in the diabetes mellitus. Also has an antidiuretic effect. ये एंटीडायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन. डायरेटिक्स तो देख लिया अपने, एंटीडायरेटिक भी मालूम होना चाहिए आपको. वैसोप्रेसिन, सो वैसोप्रेसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन. सो इट विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर. 3 रिसेप्टर होते हैं वैसोप्रेसिन के, EDH के. V1 receptor responsible for the vasoconstriction. V1 receptor activation of V1 receptor causes the vasoconstriction and it is useful in the esophageal varices. Activation of V2 receptor causes the antidiuretic effect. Okay, antidiuretic effect. Useful for central diabetes insipidus and bedwetting. V2 receptor, ये V2 receptor mediated actions होते हैं antidiuresis, which is useful in the diabetes insipidus and bedwetting. बाद में V2 receptor activation also causes the release of these factors, factor number 8 and von Willebrand factor. So release of factor 8 and von Willebrand factor for blood clotting. That's why this vasopressin is also used in the treatment of hemophilia and some von Willebrand's disease.
due to deficiency of 1 milligram. Activation of this V3 receptor by vasopressin causes the release of adrenocorticotropic hormone ACTH. Are you getting or not? समझ रहा है कि नहीं? Drug causing the nephrotoxicity. There are certain drugs which also causes the toxicity to the nephron. Nephrotoxic drug कौन से होते हैं? Are you getting my voice? Hello? Are you getting my voice? Okay. So a drug causing nephrotoxicity or kidney toxicity. So extrarenal toxicity. One got the extrarenal toxicity. So tetracyclines, corticosteroids via breakdown of protein. They cause the extrarenal toxicity. The nature of toxicity, they will cause aggravation of azotemia. Azotemia means absence of urine. Azotemia, absence of urine. Then arteries and arterioles, heavy metals like arsenic, bismuth, gold salt, horse serum, long-acting sulfur drugs, iodides, thiazides, they causes the vasculitis. आपका जो renal artery है उसका vasculitis, inflammation of renal artery, vasculitis. Glomerulus के ऊपर कौन से drug toxic होते हैं? Hydrolazine and long-acting sulfur drug, they causes the vasculitis and glomerulopathy. Convoluted tubules के ऊपर किस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट है? Aminoglycosides like kanamycin, gentamicin, organic mercurial compounds, amphotericin B, polymyxin B, cephalosporin, they cause the necrosis of proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, and tubular epithelium. Interstitium, interstitium में कौन टॉक्सिक करता है? फेनासिटीन. फेनासिटीन मतलब ये पैरासिटामोल ही होता है. इट इज अ प्रोड्रग ऑफ पैरासिटामोल. फेनासिटीन क्या है? इट इज अ प्रोड्रग ऑफ पैरासिटामोल. Okay, NSAIDs, phenytoin sulfatox. So interstitial nephritis and papillary necrosis, main cause of renal failure and chronic nephropathy. Collecting duct के ऊपर astazolamide, sulfur drugs and antineoplastic drugs. क्या करते हैं? क्रिस्टलीविया, कैल्कुलाई, हाइपोरियूसिमिया, ये यूरेटर के ऊपर मिथाइल सल्फाइड. It causes the obstruction due to the retroperitoneal fibrosis. So these are the drugs causing the nephrotoxicity. So drug causing nephrotoxicity आपको मालूम होना चाहिए. Which drug causes the nephrotoxicity? किडनी को टॉक्सिसिटी कौन करता है? तो याद रखना है आपको ये ड्रग के नाम. कौन कौन है? टेट्रासाइक्लिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. Then heavy metals like arsenic, bismuth, gold salt, horse serum, long-acting sulfur drugs, iodide, thiazides. Then again hydrolazine, long-acting sulfur drugs. सल्फर ड्रग्स क्या एक एडवर्स इफेक्ट होता है? क्रिस्टल यूरिया. सल्फर ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट होता है क्रिस्टल यूरिया. मालूम है क्या आपको? यस और नो? सल्फर ड्रग कॉजेज द क्रिस्टल यूरिया. व्हाई इट कॉजेज क्रिस्टल यूरिया? बिकॉज आपको मालूम नहीं होगा तो लिख लो. So sulfonamides they are metabolized by acetylation reaction. Phase second reaction जो होता है metabolism, acetylation reaction. And during the acetylation reaction, यूरिन का pH जो होता है वो है ना, यूरिन का pH जो होता है वो बेसिक होता है. And at that time the okay, so that acetylated derivative of sulfur drug, so in the basic medium it remains unionized form and that's why it will get precipitated. अब अगर आपको ये प्रिवेंट करना है तो you have to use urinary acidifiers. तो वो जो मेटाबोलाइट है वो soluble हो जाए. So when we see sulfur drugs at that time I will explain. So remember these drugs they cause the kidney toxicity or phenacetine, NSAIDs, phenytoin, sulfur drugs, aminoglycosides like kanamycin, gentamicin, organic mercurial compounds, polymyxin B, astazolamide, sulfur drugs, antineoplastic drug, anti-cancer drug, and methyl saccharide. So this will end your diuretics chapter also. If anybody has doubt,